से जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तुम आसी न ठीक है मैं जानी पार्छ जो पिला न आछे एक्स्ट्रा टाइम रे पळे आसो बुझे ठीक है ये प्रॉब्लम रहउची कोन मैक्सिमम पिला न आसो चैप्टर स्टार्ट करे पुणी पढे आउ कोन जेबो ये अंश बुझेबो हां बुझेबो रोहित पिला सुन एने बुझेबो ये कोन रे सब कट बुझेबो तार खाली टिके से रहउची कोन कि पुड़िया पिला ये बसलानी हम लंबोदर कथा हम कहउली हां हां तू अपन कोड रे जगतपुर रे Listen, students, we have completed 8 rules relating to subject verb agreement. ए 8टा रूल सरी गला परे अंशुमान हमर बुझेइबो तापर परे मु होमवर्क किछि देबी घरे प्रैक्टिस करिया पई लिमाली मध्ये फोन करी कहितिला रो डिक्टेट कर दबा नले व्हाट्सएप रे गोटे एक्सरसाइज आ इट इज बेटर अंशुमान हमर किछि डिस्कशन करियो मु भी डिस्कशन करी कंप्लीट करिबा अबरे पळे सना आगो को का अछि पळे आ पछरे काई बसछु ठीक अछि अब देखो रूल नंबर 9 लेखो if two or more singular subjects if two or more singular subjects preceded by preceded by each or every repeat करिए if two or more singular subjects preceded by each or every and connected by and connected by and connected by and the verb is usually singular. The verb is usually singular. The verb is usually singular. Example: each boy and each girl. Each boy and each girl was dressed. Each boy and each girl was dressed with a new dress. With a new dress. राहुल सुबुची ठीक से
with a new dress. Next students. Rule number 10. Two or more singular subjects. Two or more singular subjects. Two or more singular subjects connected by or comma nor comma neither nor take a verb Lambodar take a verb in the singular. Take a verb in the singular. Example: the boy or the girl is fond of sweets. Is fond of sweets. And F-O-N-D. Is fond of sweets. Repeat करूचे. The boy or the girl is fond of sweets. आ गोटे example ले. Either Amal or Bimal has eaten the mango. Has eaten the mango. Has eaten the mango. Next, I would example like neither you nor I was there. Next students, question number 11. Sorry, rule number 11. When the subjects joined by rule number 11. When the subjects joined by or nor either or neither nor are of different numbers the plural subject comes later. The plural subject comes later. And the verb must be plural. The plural subject comes later. And the verb must be plural. The verb must be plural. Nikhil or his friends have done this work. Nikhil or his friends have done this work. Nikhil, his friends have done this work. Rule number 12. When the subject joined by or when the subject joined by or comma nor either or
neither nor are of different persons, are of different persons, the verb agrees, the verb agrees in a person, the verb agrees in a person. ଏଠି ପଳେ ଆଗରେ ଅଛି listen Number 13 or 12. When the subject joined by or, nor, or, neither nor of different persons are of different persons. The verb agrees in person. The verb agrees in person with the one nearest to it. With the one nearest to it. Nearest to it. Example, either he or I, either he or I have done this. Have done this. Either he or I have done this. Rule number 13. Rule number 13, when subjects differing in number, when subjects differing in number or person or both are connected by and the verb must always always be in the plural. Always be in the plural. Example, you, he and I. You, he and I are friends. You, he and I are friends. Rule number 14 lekha. A collective noun again. You, he and I are friends. Totally collective पे पड़ेगा. Next lekha. Rule number 14. A collective noun takes a singular verb. A collective noun takes a singular verb when it is thought of as a whole. When it is thought of as a whole and takes a plural verb whole when the individuals a collective noun takes a singular verb.
A collective noun takes a singular verb when it is thought of, when it is thought of as a whole, and takes a plural verb, and takes a plural verb, and takes a plural verb when the individuals are separately, when the individuals are separately thought of, separately thought of. Example, example, the army was defeated. The army was defeated. Out example, the army was defeated. Out example here. 50 rupees. 50 rupees is enough for me. 50 rupees is enough for me. There is a large audience. Next. There is a large audience. Audience. AUDIENC. Next. The audience are requested. The audience. Next. Rule. Example. The audience are requested. The audience are requested to take their seats. To take their seats. The audience are requested to take their seats. The audience are requested to take their seats. The jury has ordered. Jury, JURY. The jury, Vicharak Mandali. The jury has ordered. The jury Sir. has. Aଜ୍ଞା ମାଲିମା. Sir, এই রুলটা টিকে বুঝিয়ে দেবে। এটা তো জুরি। না জুরি না এক্সাম্পল তো বুঝিয়ে রুলটা টিকে বুঝিয়ে দেবে। रूल गुडे टोटली डका सरला पर वर्तमान 15 टा जाको बुझा हैला मा ଆଜ୍ଞା sir आगे पर ये सरी गला पर स्टार्टिंग सब गुडा को बुझा हबो आ जोटा जदी किछि डाउट रहला कहले एटा WhatsApp रे सेंड कर तापर पर एक्सरसाइज ही WhatsApp रे दिया ओके ଆଜ୍ଞା sir लिसन the audience are requested to their seats take their seats next the jury has ordered ordered to hang the man to hang the man. The jury has ordered to hang the man. Next students, I would example there. The jury are divided. The jury are divided in their opinion. The jury are divided in their opinion. So students, listen. ये जो 14 रही है 14 एक्सप्लेन करे देबी ओ कहते रूल पूरा पढ़ी के आसी फिर भी डिस्कशन करे दोची तापर पर मैं कोन करबा किछि एक्सरसाइज दबा ऑलमोस्ट ऑल कंसंट्रेट और जो माने रूल न लिखि के नै जाओ पछु सुबुछि को तो ना कोन कहलु लिखि सुबुछि तो जे तो न सुबियो कहबो हैला अगेन हमर तीन चारटा और सीट वैकेंट रहउछि बिटे लिसन फर्स्ट जो रूल थिला ता कॉपी टिके मते न मनीषा के कार गोटे कॉपी टिके अछि दियो जे से टोटल लिखि दिबो आगुर लिखा हैतला जोडा ओके स्टूडेंट्स हमें भी सब्जेक्ट वर्ब बाबत रे किछि डिस्कशन करिचे सब्जेक्ट और वर्ब बाबत रे मन पई डायरेक्ट रूल को एंट्री करूचे कारण 14 रूल कंप्लीट हैला परे एक्सरसाइज गुडा में दबा
फास्ट रूल होउची हमर रूल टा कोड लिखी जो listen students fast rule two or more singular nouns are joined by one verb used will be plural. listen almost all two or more singular nouns are joined by and the verb used will be plural जदि दुईटा सिंगुलर नाउन थांती एवं ताको हमें कोन कहले जॉइन कले कंजक्शन एंड द्वारा दोष ताले राहुल सेटा कोन हबो प्लुरल मु कहबी निखिल एंड राहुल प्लुरल हे गेला खाली निखिल हला सिंगुलर राहुल हला जेतबे दुईटा को हमें को जॉइन करबा एंड द्वारा सेटी कोन करबा ना ऑक्सिलरी वर्ब यूज होबो आर सेकंड नेक्स्ट रूल को If two singular nouns joined by and point out to the same thing or person, the verb must be singular. देखो almost all those are also attending online classes. If two singular nouns joined by and point out to the same thing or person, एटा singular noun रहउथिबे किंतु गोटे पर्सन को पॉइंट आउट करूथिबो ताले कोन हबो द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर एतबेले वर्ब टा हमें सु सिंगुलर बोली कोन करबा इंप्लीमेंट करबे सिंगुलर वर्ड्स एग्जांपल द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जे ही कलेक्टर से हेले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो सिंगुलर मु पुणी जदी कहि बेटी द कलेक्टर एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एटी सेपरेट दुई जन आर एटी गोटे पर्सन होउची मन रख मु कहबी वर्तमान तम मॉनिटर होउची क्लास रे के ना अंशुमान मु कहबी तो मॉनिटर अंशुमान द मॉनिटर तम नामे कहा ऊपर पैसेज देले जणे सेही अंशुमान जे होउची मॉनिटर पुणी मु कहबी अंशुमान एंड द मॉनिटर सेपरेट अंशुमान एंड द मॉनिटर आर गोइंग टू कॉलेज एटी प्लुरल ताले पिले देखा in case two subjects are joined by as well as the verb agrees with the first subject जेतेबेले आमे as well as द्वारा कोनसी सेंटेंस दुईटा को कनेक्ट करूचे जॉइन करूचे जेतेबेले भाबिनिया पिले प्रत्येक सेंटेंस रा वाइटल जिंस होउची कोन हमरो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एस भी ओ तब जेतेबेले फर्स्ट सब्जेक्ट रहउची स्टार्टिंग रे जोटा as well as परे जोटा रहउची सेकंड हला सेकंड सब्जेक्ट तो हमको रूल कोन कहउचंदी in case two subjects are joined by as well as the verb agrees with the first subject टा singular रो अछि कि plural रो अछि सेटा हमको कोन करिया को पड़िबो सर्च करिया को पड़िबो ताले हमें देखिबा कांता as well as her children कांता फर्स्ट सब्जेक्ट her children हेले सेकंड सब्जेक्ट एवं हमर जो सेंटेंस रे फिरदोस कोमल ऑलमोस्ट ऑल बुझीबा की चेष्टा कर आ पर भी अंश मान बहुत इंटरेस्ट अछि जे बुझियो बोले कहिथि लास्ट क्लास रे those who are interested they can also explain in the class and he has certain eagerness to explain and thereafter if anybody requires then in the next class he or she will teach in the contrast रे बुझे दे परबे एठी किछि नै या तोरा रिप्रेजेंटेशन कले तमर कॉन्फिडेंस बा कॉन्फिडेंस बढ़े बोल किछि नुवा कथा नै पिला माने भी एंतु तण देखो कांता हमर सिंगुलर तण हम verb यूज कले कोन each तापर पिला देखो neither नै कि कोन थिका neither either every each everyone many a are followed by singular verb मन रख एगुडा को टिके you must have to get it by heart मन रख दरकार पले केतेरा रूल टा मुखस्त करे बसिया को पड़ी neither either every each everyone many a are followed by a singular verb ये सब बेले कहा को फॉलो करे सिंगुलर वर्ब को फॉलो करे either of the plans is to be adopted मु कहली नेक्स्ट क्लास पई पिले माने हमें गोटे टेस्ट करिबा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गोटे पुनी कहली पिले नेक्स्ट क्लास पई हमें कोन करिबा एठी गोटे प्रेजेंटेशन सिस्टम करिया प्रेजेंटेशन क्लास समस्त जा जा लर्न करछ यू मस्ट हैव टू प्रेजेंट बिफोर मोस्ट ऑल योर क्लासमेट्स एंड द टीचर तेणु पिले आमे जतडी कंफर्म हैला निजु को निजे
जे हमर neither, either, every, each, everyone, many are followed by singular. जोटे गुडा यूज करा जाउथिबे सेठी कोन अब सिंगुलर फॉर्म यूज होउथिबो तेणु हमर जो एग्जांपल थिला आइदर ऑफ द प्लान्स इज टू बी अडॉप्टेड हमें धरा जाऊ दुईटा दुईटा ऑप्शन हम पाकर अछि दुईटा प्लान कोनसी गोटे प्लान को हमें अडॉप्ट वा प्रणयन करिबा तेणु दुईटा भितर जते गोटे प्लान को हमें अडॉप्ट वा प्रणयन करबा लंबर दर एटी सिंगुलर यूज लागियो फॉर्म ना प्लुरल सिंगुलर नेक्स्ट if two subjects are joined by either or neither nor the verb agrees with the subject nearer to it. Subject nearer to in the sense second subject. किंबा यदि तीनटा हमर सब्जेक्ट थिबो नियरर जोटा ता ऊपर बे इनफोकस करिबा पर्टिकुलरली जेते बेले हम आइदर और नाइदर नॉट लगौछु सेते बेले दुई दुईटा ही सब्जेक्ट बेस करके रहउचंती हम एठी गोटे एग्जांपल देबा नाइदर ही नॉर दे आर प्रिपेयर्ड टू दिस बिले हमर फर्स्ट सब्जेक्ट हैला ही सेकंड सब्जेक्ट हैला कोन ना दे तो ही पाखरे इज बसिबो दे पाखरे आर बसिबो तो हम रूल कोन कहू लिसा सेकंड सब्जेक्ट सहित ऑक्सिलरी वर्ब इंप्लीमेंटेबल हे करी तो सेठी कोन लागला मन मोशन हस्ते तमे दिजन आ के ना हस्ते ओरे नेक्स्ट देखो ये नाउन इन सिंगुलर फॉर्म and a collective in sense takes a singular verb बहुत गुडा नाउन अछंती जो गुडा को कलेक्टिव इन सेंस बट सिंगुलर सो फार एज प्रोपोजिशन इज कंसर्न एग्जांपल हमें कहबा पार्लियामेंट पार्लियामेंट सब बळ पई कोन हमर सिंगुलर सिंगुलर नै कि तनु जदि हमें सिंगुलर बोली आउथरे पढनियो ये नाउन इन सिंगुलर फॉर्म एंड a collective in sense तेणु नाउन को आम डिवाइड जदि करबा नाउन डेफिनेशन होची द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड ए नाउन से सेंस रे भी कहि परिबा अब नाउन को आम मॉडर्न सेंस रे यूज करूचे एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल जदि हमें कोन करबा ट्रेडिशनली फॉर्मेट रे देखिबा हम नाउन को आम केबे डिवाइड करूचे गोटे कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन नाउन कलेक्टिव नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बुझिला ताले पार्लियामेंट हमर कोन कलेक्टिव नाउन क्लास ता कोन कलेक्टिव नाउन होछ ना नहीं ग्रुप ता कोन कलेक्टिव नाउन क्राउड ता कोन कलेक्टिव नाउन आर्मी ता कोन कलेक्टिव नाउन टीम ता कोन अच्छा ताले देखो पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड इट्स स्पीकर पार्लियामेंट तंकर इलेक्ट करचंदी काहाको स्पीकर नेक्स्ट ये ग्रेट मेनी इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लुरल नाउन ये ग्रेट मेनी जोटी यूज करा जाउतबो सेटे प्लुरल नाउन यूज करा जिवो एंड ए प्लुरल वर्ब इज सप्लीमेंटेड देयर इन से जगह रे हमें गोटे प्लुरल वर्ब मध्ये सप्लीमेंट करू एग्जांपल कोन आसो देखो ये ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स मेनी ए ग्रेट मेनी इतर फरक मेनी ए कोमल सिंगुलर ये मेनी प्लुरल और सा ऑलमोस्ट ऑल लिप्सा ये भी जोटा न बुझी पर जो डिटेल्स बुझो जते तरह पाइबो क्लास नबा कारण एटा सेकंड ईयर भी तुमरो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अछि +2 +3 पीजी जते कॉम्पिटिटिव दियो तमे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब जगह रही छी ये रूल सरिला परे बेस्ट होची एक्सरसाइज तिनी चारिटा ग्रामर बहिरो एक्सरसाइज सेंड कर दबा व्हाट्सएप रे समस्त प्रैक्टिस करबो जोटा डाउट थिबो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिबा हमें जोटा डिस्कशन करूथिले ये ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेस এটা তো গোটে ফিক্স है ये ग्रेट मेनी थिले फिर दोस प्लुरल मेनी ए थिले नाइस नेक्स्ट स्टूडेंट्स if two subjects are joined by with together with no less than in addition to the verb agrees with the first सेमते पिले मन रख जो जगह रे हमर एई वर्ड गुडा को पर्टिकुलरली यूज करा जाई थिबो एवं दुईटी सब्जेक्ट को को जॉइनिंग करूथिबो कोन with together with no less than in addition to the verb agrees with the first subject rule मन रखिया पड़िबो एटी देखिनियो the officer together with his subordinates was present in the function एटी कहा ऊपर इंफोर्मेशन देहला ऑफिसर तो रहिथिले फंक्शन रे आउ के रहिथिले ताको सबऑर्डिनेट्स the officer with his subordinates
verb agree करिवो कहाँ ऊपर पायल first subject ऊपर first subject ऊपर verb agree करिवो ହେଲା ଲିପ୍ସା almost all hostel ଲିପ୍ସା ଶଙ୍କରପୁର ଲିପ୍ସା ସବୁ ଶୁଣ the officer together with his subordinates was present in the function next ଆଜି ଆମେ କୋଉଟା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା 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 ତୁମ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କରୁଛ ଭାବିଲେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତମେ ଟିକେ ଘର ଟିକେ କଥା ଭାବିନିଅ କେମିତି ଲାଗେ ଅନୁଭୂତିରେ ଠାକୁର ଥାନ୍ତି ମୁଁ ପିଉଛି ତମେ ଟିକେ ଭାବିନିଅ ଭାବିଲେ କେମିତି ଲାଗେ Listen students then the dictation of today ଆମେ start କରିଥିଲେ if two or more singular subjects preceded by each or every and connected by and the verb is usually singular students listen ଆମର ଯଦି preceded each ପରେ boy each ପରେ ମଧ୍ୟ car precede ହେଇଛି ନା ନାଇଁ each ପରେ boy each ପରେ girl ତା ମଝିରେ କଣ କରିଛି co-joining କରିଛି and the verb is usually singular ଯେତେବେଳେ each କଥା କହୁଛୁ it is singular each ଟା ଗୋଟେ କଣ distributive ଏଇଟା ଟିକେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ପ୍ୟାକେଜ ନବା ଗ୍ରାମାର କ୍ଲାସ ଯୋଉଟା କି କମ୍ପଲସରି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରହିବ କାରଣ ପାର୍ଟସ ଅଫ ସ୍ପିଚ ର ଯୋଉ ରହିଛି 8ଟା ପାର୍ଟ ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ରେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଲାଗିକିରି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ନେଇକିରି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିନବୁ ଲଗାତାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାର କି ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କ୍ଲାସ ଗୁଡା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ପିଟିଆଇପି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବା ଯଦି 8 ଦିନ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ନ ମିଳିଲା 4ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ ନେଇକିରି ଟୋଟାଲି ପାର୍ଟସ ଅଫ ସ୍ପିଚ କଭର କରିବା ପାର୍ଟସ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଯଦି ହେଲା 2 ଘଣ୍ଟିଆ କ୍ଲାସ ରଖିଦବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଇନଫର୍ମ ଦବା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ଆଉ ଦିନ ବେଳା କ୍ଲାସ ବି ରଖିଦବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେସନ ରେ it would be appropriate ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିବ distributive in the sense each ଟା ହଉଛି distributive every ଟା ହେଲା distributive ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ରହୁଥିବ କ୍ଲାସ ରେ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଙ୍କୁ ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ ଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି କ୍ଲାସ କରିନବା ଦେଖ if two or more singular subjects preceded by each or every and connected by and the verb is usually singular ଲିପ୍ସା ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ each ଲାଗିବ ମୌସୁମୀ every ଲାଗିବ ତାକୁ ଆମେ କନସିଡର କରିବା singular ମୌସୁମୀ ନା କଣ ମାନସ ହଉ ସେ ଚଳିବ ଏକା ମୌସୁମୀ ମାନସ ଯିବ ଆଉ ତାପରେ ପିଲା ଦେଖିନିଅ example each boy and each girl was dressed ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଣ କରିଥିଲେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ next or more singular subjects connected by ଯେତେବେଳେ ଦିଟା singular subject connected ହେଇଥିବେ କାହା ଦ୍ୱାରା or nor neither nor
टेक ए verb in the singular एटा ठीक है और नॉर नाइदर ये माने जदि कोन करथिबे हम नेइथिबे पर्टिकुलरली जॉइन करा जाइथिबे ताको हम सिंगुलर सब्जेक्ट रे कोन करबा एग्री करबा verb को देखो द बॉय और द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स गोटे पुओ पिला हो कि गोटे झियो पिला मिठा खाइबो कि भल न पाए समस्त भल पाए नहीं कि so the boy or the girl is fond of sweets is hela auxiliary for singular form then either or bimal अमल हो कि बिमल ऐसा है कि दो सब्जेक्ट में यदि आइदर और नाइदर नॉट ये सेकंड डिफरेंट पर सेकंड एडजस्ट सेकंड सब्जेक्ट सेकंड हां तो खाली जदि इंडिविजुअली आइदर थिबो नाइदर थिबो और थिबो नॉट तो गोटी इंडिविजुअल सेते बळे कोन करिवो हमें रूल जोटा कले इट इज रिलेटिंग टू बी नेक्स्ट जोटा रहिला आर भी टिके किछिटा एक्सेप्शनल रहउची लुसेंट रो जेतेबळे ग्रामर हमें करिवा केतेटा आदि भी रहउची चेंजेबल सेंस रे सेटा मध्ये प्रैक्टिस करिवा एबे गोटे फॉर्मेट रे गला परे आ गोटे फॉर्मेट को दिबा ए जो रूल रो किछि एक्सेप्शन अछि कि जदि एक्सेप्शन अछि त एग्जांपल से हमें डेमोंस्ट्रेट नेक्स्ट भी आइदर सॉरी neither you nor I watch there नाइदर नॉर जदि लागि गला ताले सेकंड सब्जेक्ट सेटा जोटा मन सापर डिस्कशन करथिला एग्री करिवो के जानि होछ ना निखिल जानि परजु आज जाई घर देखिबो न जानि पर तोर व्हाट्सएप ग्रुप रे हमर अछु आज एक्सरसाइज सेंड हबो जे जोटा न बुझी परिबो टोटली हमर जोन कॉलेज बस 11 रो आसी परिबो 11 बेले फोन करी मते कि सर हमें जिपु टिके बुझे देबे के आउथरे बुझे देकरी ग्रामर बुक देई देले तमे तो एक्सरसाइज कर नबो तबे कांसेप्ट क्लियर एक्सरसाइज न कले कांसेप्ट क्लियर नेक्स्ट when the subjects joined or nor either or neither nor are of different numbers the plural subject comes later and the verb must be plural देखो ଯେତେବେଳେ ଆମେ particularly rule ରହିଛି either or neither nor ଏଗୁଡାକ o join କଲା ପରେ ଆମେ କହିଛେ କଣ ନା verb ଟା ସବୁବେଳେ ଲମ୍ବ ଦ୍ୱାରା agree କରିବ କାହା ସହିତ second ସହିତ ଏବଂ ଆମର ସାଧାରଣତଃ फास्ट सब्जेक्ट रे हमें कोन करू सिंगुलर यूज करू कोन की सब्जेक्ट को अब सेकंड रे कोन यूज करू प्लुरल जोडी ओकेजनली करा जाय छै तब कोन करिवो सेकंड सब्जेक्ट पे एग्री कर हमर वर्ब पे एग्जांपल रिकॉर्ड निखिल और हिज फ्रेंड्स तल हमर सेकंड सब्जेक्ट की हला हिज फ्रेंड्स पाकर हाफ बसिबो ना हाज बसिबो हाफ बसिला निखिल जिन था